Hello guys, welcome to our YouTube channel. So my name is Gopal Goyal. I have done my MSc from IIT Bombay. So हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और सम बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। तो हमारा लास्ट टॉपिक था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो आज हम पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो कुछ टॉपिक्स और हैं हमारे बेसिक्स ऑफ वेक्टर में, देन हम डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर्ल पे जाएंगे। सो हम पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, टू वेक्टर बी और वी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसके बाद एक के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको सिंपल लिखने का तरीका है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और इसको अपन सॉल्व करते हैं एज अ डिटर्मिनेंट। सो इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है guys? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। बट या तो लाइक पहली प्रॉपर्टी है कि ये साइक्लिक होता है। साइक्लिक इन द सेंस, सपोज देयर इज ए बी सी, इफ वी रोटेट them in the cyclic manner, like a go to b and b go to c and c come to a, so it will be cyclic manner. So ये बराबर होगा c वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर, ये बराबर होगा b वेक्टर c वेक्टर a वेक्टर। हमने इसको एक बार और साइकिल में घुमा दिया। सो इसका ये साइक्लिक पैटर्न है। और यदि ये साइक्लिक नहीं है तो हम इसमें एक नेगेटिव लगा देंगे, जैसे कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। यदि हम बी और सी को चेंज करें ओनली, तो यहाँ पे आएगा ए वेक्टर माइनस में सी वेक्टर बी वेक्टर, ठीक ऐसा। सो आई होप तुम समझ गए होगे। उसके बाद अपन कुछ और बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि रह गए हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सो हमारा पहला था some very basics of vectors. Let me just give you brief idea about that. I hope you know already in your bachelor's. So first is the projection of vector. Projection of a vector on b vector. So let's suppose हमारे पास एक वेक्टर है b वेक्टर, a वेक्टर है, एक वेक्टर है a वेक्टर। So, so a component of a vector along b vector is called the projection of a on b. So it will be a vector dot b cap. So let's assume that is theta. So projection will be a cos theta. So how we can represent a cos theta? Uh, a का magnitude and b cap का magnitude. B cap is a unit vector and angle between them. So it will be simply a cos theta because b is a unit vector. So the magnitude of unit vector will be 1. Then इसके बाद अपन एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी देख सकते हैं। आपको आता होगा बट हम एक बार देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम एडिशन। there is one vector, that is b vector, and this is a vector. So this this vector will be summation of the a vector plus b vector. This will also represent like this. That is also called b vector, a vector. So this is simply addition of vectors. Okay, then अपन आगे चलते हैं। अपना अगला टॉपिक होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल।
So इसकी कुछ applications हैं, like we can say there's some applications of vectors or basics of vectors. So applications में हम चलते हैं, तो पहला applications देखते हैं, area of triangle. So this is our triangle. A, B, C are the 3 points. Then area will be 1 upon 2 AB vector cross BC vector. Similarly, दूसरा एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पहले हम पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं. Yeah, so assume the points are A, B, C, D. So area of parallelogram will be, we can say that there are two triangles. So we can write like 2 into 1 upon 2 AB cross AB cross AD. And again we can see like upon 2 AC vector cross BD vector. Like these two vectors, BD and AC, cross product of these two vectors. इन पे बेस अपन कुछ एप्लीकेशंस और देख सकते हैं, लाइक टॉर्क, like to tau vector equals to r cross f. So this is one of the application. And अगला देख सकते हैं angular velocity which is v vector बराबर omega vector cross r vector. There are some applications of cross product. So this is the basics, I think. Yeah. So हम अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, gradient of scalar field. So gradient of the scalar field is nothing but like a change rate of change of a scalar function at a particular direction. I will tell you. So first, let me show you the this is symbol of gradient, delta grade, or we can say the Dale operator, which is written like that: d by dx I cap, d by dy j cap, d by dz k cap. So let's assume phi is a scalar field or function, we can say. So gradient of a scalar field will be del upon del x phi I cap, del upon del y phi j cap, del upon del z phi k cap. So gradient of a scalar field is a vector quantity. So gradient of a, let's assume we have calculated this at a point x, y, z. So gradient of a scalar function phi at any point x, y, z is a vector quantity whose magnitude is all equals to the rate of change of phi. So ग्रेड किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट रेट ऑफ चेंज को बताता है इन द डायरेक्ट अलोंग द डिस्टेंस टू द नॉर्मल टू द लेवल सरफेस. ठीक है, हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा क्लियर होगा कि क्या है. जैसे कि हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल फाई बाई डेल एन एंड एन कैप. सो एन कैप विल बी द डायरेक्शन and this will be the magnitude. Then इसी में एक अगला पॉइंट है डायरेक्शन
derivative. So direction derivative is defined as the rate of change of phi with distance along the direction of vector A. So directional derivative will be rate of change of phi in the direction of A cap. This is called directional derivative. Okay. So it will be represent like that delta phi magnitude into cos theta. Theta will be the direction between the A cap and delta phi. So we can represent like that. That is any arbitrary surface at any point. Assume that is n cap, which is direction of gradient of scalar function, and there is a direction of a vector. This is any arbitrary direction. Angle between them will be theta. So डायरेक्शन डेरिवेटिव का मैक्सिमम हो सकता है ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड, तब cos थीटा इक्वल्स टू 1 हो. ठीक है, देन अपन आगे बढ़ेंगे. कर्ल कर्ल और डाइवर्जेंस. पहले अपन पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड. So let's suppose we have a vector vx I cap, vy j cap, vz k cap. Divergence of this vector will be del upon del x vx I cap, not I cap, and del upon del y vy, del upon del z vz. This quantity will be scalar. इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द outward flux of the vector field per unit volume increasing by an infinitesimal closed volume enclosed by any volume or surface surrounding by a point P. So what does it mean? Let's suppose there is our any surface. So how much flux is going outward? So quantity of the flux is going outward is the value of divergence. I hope that that will be understood. If our flux is outward, then we will say that that is positive. If flux is inward, then we will get negative phi or positive phi. Okay, like यदि डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर यदि हमारा पॉजिटिव है तो वो होगा आउटवर्ड फ्लक्स. यदि डाइवर्जेंस ऑफ वी हमारा नेगेटिव है तो वो होगा इनवर्ड फ्लक्स. और डाइवर्जेंस यदि जीरो है तो नो फ्लक्स is flowing from the surface means no net flux will be zero. So net flux will be zero, or we can say solenoid field. ठीक है guys, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि हम बाद में देखेंगे, सारी प्रॉपर्टीज एक साथ फॉर्मूलाज. अभी अपन ऊपर से देख लेते हैं क्या है. अभी अपन चलते हैं कर्ल पे.
curl of vector field. So let's suppose we have vector v, vxi cap, vy j cap, vz k cap. So हमारे वेक्टर का कर्ल होगा, that is simple cross product. So we will like that ijk del upon del x del upon del y del upon del z vx vy vz. So the physical interpretation of curl is rotation. Basically it is rotation. So direction of curl of a vector field is along the axis of rotation. So like that. There is called direction of curl. Yeah. Um, Let me give you some example also. Let's suppose our field is like that. So there is no rotation with the increment. So that's why the curl will be 0. Let's suppose we have another field. See, कुछ flux left में है और कुछ flux right को है. That means that the curl will not be 0 because there is some rotation. And similar to like that, like water is flowing in the sink. That is one of the example for that. ठीक है. So इनके कुछ formulas भी हैं, जैसे कि addition simple और multiplication. Like some of the main formulas I can write, like gradient of summation of two vectors will be, well, sorry, divergence of two vector will be del dot u plus del dot v, and one is the divergence of multiplication of a scalar function and vector function uh, will be gradient of scalar field into v vector plus u into divergence of vector field. Similarly, few for the cross product, like for the curl, because v vector, both are the vector fields, so it will be curl of v vector plus curl of u vector. And curl of u into v vector, u is the scalar field, v in a vector field. uh, Gradient of scalar field into v vector plus u into curl of vector. We can prove these formulas also by expanding the u vector and v vector in the form of ux, uy, uz, vx, uy, vz. So we can prove like that also. So यहाँ पे हमारा gradient divergence curl खत्म होता है. So एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा. तो हमने शुरू किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से. सो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, जिसको अपन ए बी सी फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको सॉल्व करने का तरीका है ग्रेडियंट ऑफ ए वन ए टू ए थ्री बी वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री. ये साइक्लिक होता है, और यदि ये एंटी साइक्लिक है तो हम माइनस साइन लगा देंगे. देन हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. सो वी हैव एनी वेक्टर बी एंड ए वेक्टर, another vector is a. So projection of a on b will be a cos theta. So it will be like that, a vector dot b cap. Some then next topic will be the addition. So हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b, उन दोनों का एडिशन होगा a plus b, which is a vector plus b vector. So area of triangle will be 1 by 2 ab cross bc, and area of parallelogram will be 1 upon 2 ac cross bd. Ac cross bds are the vickern of that parallelogram.
देन हमने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड. So gradient of a scalar field is a vector quantity which is represent the direction of a level surface. If we solve the question, then we will know the more about the scalar field also. Then हमने पढ़ा था direction derivative. So direction derivative is the gradient of any scalar function in the direction of arbitrary uh, vector. So it is the direction derivative. Then हमने पढ़ा था divergence of a vector field. The divergence of a vector field is shows the how much flux is flowing from a volume surface. So that is simple. The divergence of the vector field is the scalar, and the positive divergence will be shown the outward flux, and negative will be shown the inward flux. And the curl of a vector field is represented like that: del cross V equals to Isaac del upon del x del upon del y del upon del z and Vx Vy Vz. So it simply shows the rotation of a vector field in any surface or any volume. So yeah, so these are some formulas. एंड इसी के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं. थैंक यू गाइस. यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में. अगली वीडियो में हम आगे लाइन इंटीग्रल्स पढ़ेंगे. उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे. थैंक यू गाइस.